Namaskar. Myself, Dr. Isnay Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh. Welcome you all in today's lecture of research methodology. Today we will discuss on this topic of demerits of observation method. So, in our previous class, we have discussed about the merits of observation method. Today, we will ponder upon its demerits. So, I have described here some titles about its demerit. One by one, we will try to analyze every title, every point. So the first one is limited use. The second one is unsuitability in phenomena. The third is bias and useful for qualitative data only. Bias and useful for qualitative data only. The next one is study of past events not possible. Study of past events not possible. Next is inadequacy of sense organs. Inadequacy of sense organs. And last is unsuitable for long duration studies. Unsuitable for long duration studies. Okay. So, one by one, we try to explain and analyze these points. First of all, we have already discussed much about the method of observation. What is the observation? We know that in observation method, we have to rely upon our own eyes and to study any particular social event or the social unit which we are trying to study in our research project. Then the researcher himself will take the note of it, of each and every detail, the situation in which he is observing with his interview schedule, with his pilot survey detail, whichsoever phase in which he is doing his research work. In every phase, there is the importance of observation method. So, we can say from the first step to last step, observation method is in existing for every social research. Okay. So, first we will talk about limited use. How it is attached with the observation method that it has the limited use. How? Try to understand that in observation method we are trying to study a live event, because only live event you can study with your own eyes directly. But it is not possible to have a live event every time. Sometimes the incident may happen and you are trying to study about them, then the observation is not possible. If incident happens in past time, if your topic of study is related with the past time, then how can you observe this event or this topic or this social unit surroundings? It is not possible. So, because of that limitation, we can say that it is a demerit observation method, that it is very limited use. The limits are there. You can study only present, live events. Okay. So you cannot say anything with observation method of the past event which has already happened, and also it is very difficult to predict about the future events
with the help of observation method. It is also very difficult of the predicting the future events and the future orientation of any social issue. Okay, so this is important demerit of observation method. So if you are using observation method and you have to use it in every social work, it is compulsory to have to use of observation method. Then you have to take note of these kinds of merits and demerits which we are discussing in our classes. Okay, हिंदी में यदि समझने का प्रयास करें तो सीमित उपयोग हो सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड का, अवलोकन प्रविधि का। क्यों सीमित उपयोग हो सकता है? क्योंकि अवलोकन प्रविधि में हम जानते हैं कि जो अध्ययनकर्ता होता है वो स्वयं उपस्थित हो करके उस सामाजिक घटना या सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक इकाई के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर के प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो प्रत्यक्ष अध्ययन तो केवल वर्तमान का संभव है, ये न संभव है अतीत के लिए, अतीत में हुई घटनाओं के लिए या अतीत के समय के समाज की इकाइयों के अध्ययन के लिए, न ही भविष्य के लिए। तो ये एक बाध्यता हो जाती है, ये एक सीमा हो जाती है कि आप अवलोकन प्रविधि के द्वारा केवल वर्तमान में घटित घटनाओं का जो आपके सामने घटित हो रही हो, जिनका अवलोकन, जिनका निरीक्षण आप स्वयं उपस्थित होकर कर सकें, केवल उन्हीं का अध्ययन कर सकते हैं। So it is a limitation of observation method. The next one is unsuitability in phenomenon. How it is unsuitable? Try to understand. Many social interactions and many events of our social life and one's personal life is unobservable, and many phenomena in our social interactions and our relations are unobservable. That such as how can you observe the ratio of friendship in some people? How can you decide the ratio? It is not possible. So the love, the compassion, these kinds of phenomena are unobservable with this observation method. You cannot observe directly. It is not a materialistic thing. Okay, you cannot one person can have the hidden tendency of hatred over you and showing the behavior of friendliness. You cannot observe directly. Okay, so some human behavior, feelings and emotions are so hidden that it is unobservable directly. So these are the unsuitability, and one's personal life or married life or the domestic violence, such are the conditions that you cannot observe directly. It is very difficult. So these are the limitations, and in this situation, these kinds of situations, observation method is unsuitable for study. Okay, हिंदी में यदि समझने का प्रयास करें, अनुपयुक्तता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हम सामाजिक संबंधों से अपने समाज का निर्माण किए हुए हैं, और ये सामाजिक संबंध विभिन्न प्रकार के उद्वेगों, आवेशों, भावनाओं के अधीन होते हैं, जैसे कि प्रेम है, मैत्री है, सद्भावना है, करुणा है, क्रोध है, ये भी शामिल होता है। बहुत सारी हमारी सामाजिक इंटरेक्शंस में, अंतःक्रियाओं में, तो इन सब का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है, प्रत्यक्ष अवलोकन बहुत कठिन कार्य है।
और इनके अनुपात का जो है आप आकलन सीधे तौर पर डायरेक्टली नहीं कर सकते। So these are the limitations and demerits which we are discussing, that unsuitability of the social relations which is connected with the observation phenomenon, that some kinds of situations and some emotions underneath the social interactions, you cannot observe them directly, and it is very difficult to have a measurement of it with observation technique. Okay, so many kinds of equipments you can have, just as scientific equipments are now available for measuring the human tendencies and their behavior, and also the emotional reflection and fluctuation of emotions in between social relations, in between personal relations. But in observation technique, it is not possible to directly observe these kinds of emotions and tendencies. Okay, the next one is bias and useful for qualitative data only. First, we will talk about the biasness in observation method. Everyone has a different kind of conditioning. Okay, so this conditioning make your way of thinking, your way of behaving, your likes and dislikes, and to be away from likes and dislikes. Okay, to disconnect yourself while you are studying with observation method any social research topic, then it is very difficult to detach from your own likes and dislikes, your prejudices, your conditioning. So your conditioning may overtake your perception of research anytime. Maybe consciously, maybe subconsciously, or maybe unconsciously. It is possible. So it is very difficult to not to have a bias study with observation method. So it is a demerit of it. In any condition, in any situation, bias may come, your prejudices may come, and the whole project of scientific study may be in danger with your biased nature. Okay. The next part is, it is useful for qualitative data only. So in qualitative and quantitative techniques we are performing social researches. So with the help of observation method, we can only have the qualitative data. The quantitative data is not possible with the observation technique, because with large amount of people, how can you have the qualitative data with your own direct observation in the live situation? It is not possible. For a large scale of people, you are having very limited energy source and limited time and limited economical sources. With these limitations, there is a very much struggle for having a large scale of people's data in simultaneously same time, in the same time event and interval. It is not possible for the researcher which himself or herself to have qualitative data of all the peoples and the same time of live event, because observation is only possible for a live event. Okay, so this is the limitation, that it can be used in only qualitative techniques, and it is a very limited use in the qualitative methods, and about the qualitative data, quantitative data, sorry. So we can use it only qualitative methods and qualitative data, and for the quantitative techniques
techniques and quantitative data, the observation method is unuseful and it is very hard to use them and have a scientific study which is accurate and reliable. Okay, because the compilation is very difficult with the observation technique because it is useful and convenient for qualitative techniques and data only. So then our next point is that study of past events not possible. We have already discussed about it. So first try to understand this subtopic in Hindi. पक्षपात, बहस का अर्थ है पक्षपात आ जाएगा, संभव है पक्षपात आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक निश्चित संस्कारों में संस्कारित हुए हैं। हम जिस भी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हम निश्चित संस्कारों में संस्कारित हुए हैं और उन संस्कारों के द्वारा ही हमारी पसंद नापसंद, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी धारणाएं और हमारे मन के कार्य करने का तरीका सब निर्मित है। और अनुसंधान के किसी भी चरण में हमारे पक्षपात जो है वो सामने आ सकता है अध्ययन के द्वारा। ये चेतन रूप में भी आ सकता है, अवचेतन रूप में भी आ सकता है या अचेतन रूप में भी आ सकता है। तीनों संभावनाएं हैं। तो ये काफ़ी कठिन कार्य है, इसीलिए हम इसे अवगुण के रूप में देख रहे हैं, अवलोकन प्रविधि के। इसके साथ ही हमने देखा कि यह केवल गुणात्मक विधियों के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से केवल आप गुणों का अवलोकन कर सकते हैं, वो भी एक सीमित मात्रा के लोगों के मध्य, जब आपको उत्तरदाता सीमित हो, जब आपके सैंपल साइज जो है सीमित हो। और बहुत बड़ी मात्रा के लोगों का यदि आपको गणनात्मक अध्ययन करना है तो ये कठिन कार्य हो जाए, क्योंकि एक ही साथ बहुत बड़ी मात्रा के लोगों का प्रत्यक्ष रूप से गणनात्मक अध्ययन करके गणनात्मक तथ्यों का संकलन करना एक अध्ययनकर्ता के लिए मुश्किल कार्य हो जाता है, अगर बहुत बड़े क्षेत्र में उत्तरदाता फैले हुए हों तो इसलिए हम इसे सीमा के रूप में देख रहे हैं अवलोकन प्रविधि के। नेक्स्ट वी आर discussing about study of past events are not possible. So with the direct observation we are bound to be in a present scenario only. So when we are talking about social events and the part of the society and social system, which are the social units and social atmosphere itself, that we can only study the present scenario or the present social events, the present social unit which is happening now. Okay, but the past social incidents and the past social structures parts, we cannot study them with the observation method, because the direct observation, it is not possible with the past happening social events. So it is a boundary, it is a limit that we can only the present events and the past events study is not possible with observation method. भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन अवलोकन प्रविधि की सहायता से बहुत कठिन कार्य है, संभव नहीं है। हम आंकड़े भी जुटाएं, हम पांडुलिपियां भी एकत्रित करें, हम साक्ष्य भी एकत्रित करें, तो काफ़ी कठिन कार्य होता है। और जो है वैज्ञानिक प्रविधि के अंतर्गत तो होने वाली वस्तुनिष्ठता और अन्य प्रकार की चुनौतियों को परिपूर्ण कर पाना मुश्किल होता है अवलोकन प्रविधि के अंतर्गत, जब हम भूतकाल में घटित किसी सामाजिक घटना या समाज के किसी भाग का अध्ययन करना चाह रहे हो तब। ओके,
The next is inadequacy of sense organs. So we know that in observation method we have to rely upon our eyes only and our ears only. After eyes, ears. Okay, your own ears. You don't have to rely upon anybody's opinions and anybody's gossips which are running when you are studying and researching any social event or the part of the society. So it is very difficult to have with the limited sense organ the whole social phenomenon study which is related with that particular social event or that particular social unit. So it is a demerit of observation method. The inadequacy of sense organs to study any social event. ओके, हिंदी में भी समझने का प्रयास करें तो अनुपयुक्तता है हमारे संवेदी अंगों की, क्योंकि हम केवल नेत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और नेत्रों के बाद कानों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी के द्वारा बोली गई बातों को, कहीं से सुनी गई बातों को, हमारे स्वयं के पूर्वाग्रह धारणाओं इत्यादि को हटा करके वस्तुनिष्ठ प्रकार का अध्ययन करना होता है अवलोकन प्रविधि के अंतर्गत। तो जब हम इस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं तो एक सीमा आ जाती है। हम सभी प्रकार के सेंस ऑर्गन्स का, सभी प्रकार के अपने क्षमताओं का, बौद्धिक क्षमताओं का जो कि हमारे संवेदी अंगों से जुड़ी हुई है, हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये सीमा है अवलोकन प्रविधि की। नेक्स्ट एंड लास्ट सबटाइटल ऑफ टुडेज डिस्कशन इज अनसुटेबल फॉर long duration studies. If we try to study a particular area which is having the vast field, so for the study of vast field, the direct observation is very much difficult, because in large field, in large area, there are so many respondents which can be your sample, and your sample size will be also very big according to the research area. And for the big research area you will need more time, and simultaneously you cannot study many respondents. So these are the limitations, and because of these limitations long duration studies are not suitable with observation method. So if you are trying to study a particular social event which is happening in a small community or a small group of people, then the observation method is perfect and best. But a larger area with the so many respondents which are expanding in the large scale, then it is very difficult to have observation method technique in this large area with so many respondents which are expanding in that large area, to having their opinions in simultaneous time and simultaneous perception. It is very difficult job for the researcher. So in this kind of research there is a need of many observers, many researchers, then only the long area study with long duration time is possible with observation method. So many observer is needed for a big area and for long studies. A single observer, a single researcher is not appropriate for a long study area and for the long duration studies. हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तो अक्सर जो लंबी अवधि तक चलने वाले जो अध्ययन होते हैं वो एक बड़े स्तर पर फैले हुए समुदायों के अध्ययन से संबंधित होते हैं।
तो बड़े स्तर पर यदि हमारे उत्तरदाता फैले होंगे तो एक साथ उनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, प्रत्यक्ष अवलोकन करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसलिए ये एक अवगुण के रूप में अवलोकन प्रवृत्ति के सामने आता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले अध्ययन के लिए या बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए लोगों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त हो जाता है अगर हम केवल एक उत्तरदाता, एक जो निरीक्षणकर्ता के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए लोगों का अध्ययन करने के लिए और बहुत समय तक चलने वाले अध्ययन के लिए हमें बहुत सारे निरीक्षणकर्ताओं की आवश्यकता होगी। तो इन बहुत सारे निरीक्षणकर्ताओं के अलग अलग क्षेत्रों में बंटवारा करके अध्ययन करने के बाद उन अध्ययनों को विश्लेषित करना, उन्हें कंपाइल करना, उन्हें एकीकृत करना और निरीक्षण की तरफ ध्यान दे करके निष्कर्ष तक पहुंचना, सैद्धांतिकरण करना, ये प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। और केवल छोटे समुदायों के अध्ययन के लिए या किसी ऐसी घटना के लिए जो एक निश्चित दायरे में घटी हो, तभी केवल ऑब्जर्वेशन मेथड का, अवलोकन प्रविधि का उपयोग करना सामाजिक अनुसंधानों में सटीक बैठता है। तो आज हमने चर्चा की अवगुणों की अवलोकन प्रविधि से संबंधित। तो हम जानते हैं कि जितने इसके अवगुण हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके गुण हैं। ये कुछ सीमाएं हैं जिस सीमाओं में अवलोकन प्रविधि बन जाती है और हमें इन सीमाओं का ध्यान रखना है जब हम शोध कार्य कर रहे हैं तब, क्योंकि इससे हमारे शोध कार्य में उत्कृष्टता आएगी। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।